मौसम काफ़ी अच्छा है। 4 बज गए ने तो इंशाल्लाह घंटे तक जो ना पहुंच जाना है। आई थिंक ये क्लोज किया हुआ है ना उन्होंने, मेरा ख्याल है ये ओपन है लेकिन ये वाला जो है ना ये क्लोज किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? अज तुहानू विखाने आ झूले अमेरिका दे। असी कैरोविंड्स कोई नाम इत्थे शार्लेट है, उत्थे जा रहे हैं तो सोचा वाह सुनिया अमेरिका दे विच ना बड़े लंबे लंबे तो बड़े बड़े सोहने सोहने झूले होंदे ने, क्यों ना अज इंजॉय करिए। इस टाइम तकरीबन 4 बज गए ने ते लेट हो जाएंगे तो चलते हैं तो वेखते हैं इंजॉय करते हैं। अज का दिन मौसम काफ़ी अच्छा है। वैदर इंजॉय करो, रास्ते इंजॉय करो। सफ़र लंबा ही हो जा रहा तो मैं सोचा कुछ खा लिए, ये भी नहीं पहुंचे है, ये भी 36 माइल बाकी है। शुक्र है पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी ये 16 माइल दूर है। बारिश हो रही है लेकिन खास नहीं हुई है। पहुंच गए हैं। काफ़ी दूर ही पार्क कर दी है, लेकिन दूर नहीं करना चाहिए था वैसे। ले जी आ गए हम इधर और अब हम जाएंगे अंदर। इंट्रेंस है ये। आज हम सारी जो है ना सारे झूले लेने हैं आज। तो चेक इन कर लिए ना हम पर, उसके बाद तो जी मिली ये $200 फी। 1 टिकट मिली 79 दी, $25 हो गए ओदे की नाम लईदा है ना। थैंक्स। 25 की पार्किंग होगी, 80 दी 1 होगी, अप्रोक्सीमेटली 185 लग गया है फ़िलहाल इंटर होने तक ही। चलो चलें जी, हम अब आ रहे हैं अपनी लाइन में। Yo, you can't go past them. Stop. Sorry. Hey. इधर जाके तो फिर रहने अच्छी खासी बदबू जी आ रही है। पहली राइड, पहला एक्सपीरियंस इन अमेरिका। थैंक्स।
Thank you for visiting Carowinds and welcome aboard the Carolina Sky Tower. For your safety and comfort, please remain seated during the entire ride. The Carolina Sky Tower is one of the park's original attractions and rises to a height of 320 feet. At the top of the tower, you will see a breathtaking 360-degree panoramic view of Carowinds and the uptown Charlotte skyline. It has been the place where the Carolinas come together. The park opened to the public in March 1973 at a cost of $70 million. This was following an extensive 4-year planning period spearheaded by Charlotte businessman Early Punchett. Half was inspired by a 1956 trip to Disneyland, and his dreams of bringing the states of North and South Carolina closer together. The name Carowinds was inspired by the park's original theme, representing the history and culture of the Carolinas. It is a blending of the words Carolina and wings, in reference to the wings that go across the two states. Carowinds still holds the title of being the only amusement park in the United States that is situated within two states. Carowinds' original vision for Carowinds was to transform the include hotels, a shopping center, a golf course, an NFL stadium, and other tourist attractions. However, as was true for other theme parks across the country during this time, attendance at Carowinds was severely impacted by the 1974 oil crisis. And as a result, We should come in the morning. resort attractions were abandoned. Carowinds headquarters of the Carowinds Corporation continued to operate the theme park through 1974. They saw the attendance and mounting debt, forced them to sell the company to Taft Broadcasting in early 1975. Through several acquisitions over the years, Carowinds eventually became part of the Paramount Parks. सेक्शन हो गया पिक्चर सेक्शन के बाद अब हम जाएंगे कुछ देखते हैं इधर जाके इधर क्या चक्कर है आई थिंक ये क्लोज़ किया हुआ है ना उन्होंने मेरा ख्याल है ये ओपन है लेकिन ये वाला जो है ना ये क्लोज़ किया हुआ है एक नेक्स्ट राइड है सेकंड राइड है हमारी इसके ऊपर चलते हैं ये वाली है तो छोटी सी है लेकिन चलो देखते हैं जाके कैसी है लो जी स्टार्ट होगी राइड चलिए हाँ ना लो जी राइड ले लिया हमने सेकंड अब हम चलते हैं आगे
बड़ी हॉरिबल राइड सी। ਇਹ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਰਾਈਡ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੀ ਰਾਈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਰਾਈਡ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਰਾਈਡ 'ਤੇ ਚਲੀਏ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਾਈਡ 'ਤੇ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਅਲੋਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਬਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ ਕੋਬਰਾ ਕੋਬਰਾਸ 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 अटेंशन guys, excuse me। ये राइट है। फट गिरा एकदम फट गिरा। Go fast to say rock and roll. Rock and roll. Say roll. Rock and roll. Rock. Roll. Roll. Oh, moving it up speed. Rock. Roll. Rock. Roll. You're gonna get very close to the next 6 seconds. You guys got very close. Now next time, and here's how you ride. Next to Goldrusher. यार हम जो है ना एक तो जल्दी बहुत आए हैं, मतलब लेट आए हैं। कितने बजे? 4 बजे आए हैं, 10 बजे ये क्लोज़ हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अब मॉर्निंग में आएंगे। इतनी राइड्स हैं इधर, इतनी ज़्यादा राइड्स हैं कि
टाइम ख़त्म नहीं होता, राइड नहीं आई मीन ख़त्म होती। 2 दिन का ये मतलब कि है। वो एक बड़ी राइड है, उधर ही चलते हैं। एक ही राइड लेते हैं, 2 घंटे लग जाने हैं। Welcome to Copperhead Strike. This offer is not permitted. It must be left to the For your safety and the safety of other riders, hats, glasses, and cell phones must be stored in a pocket. Hands must be free to grab onto the lap bar while riding. इधर से चलते हैं नीचे से। चलिए हम वापस रात हो गई है इतने फिलहाल तो राइड ऑलमोस्ट सारिया राइडां असीं मिल लईआं ने लेट्स गो फॉर द बिगेस्ट राइड देयर आज का दिन का नाम होंदा है तो फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर लाजमी करो थैंक यू सो मच हैव अ वंडरफुल एंड ब्लेस्ड डे बाय